1 meter apart in vacuum has some force of repulsion. The force of repulsion between these two charges remains same when placed in direct, like distance of separation is. इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी किया था हमने बट अगर हम कंसेप्ट से करें मैं given that in vacuum the forces we are given that if you place it in a medium of dielectric constant 4, force remains unchanged. What should be the distance? In medium force becomes epsilon r times this. So we say for force to remain same, these two values should be same. Against दोनों के denominator same होंगे. R1 square should be equals to epsilon r R2 is R1 by root epsilon r. Question में हमें given है that R1 is 1 meter. Character constant is given as 4. So it will be 0.5 meters. Clear है question? Next is 2 point charges plus 6 and plus 4 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with the force of F. They are repelling each other with the force F. It's proportional to the product of two charges, 4 and 6. But each charge is given a charge of -5. -5 coulomb दोगे तो 4 coulomb becomes -1. This will be +1. Now force becomes attractive. Just पहले दोनों एक positive charges है now one is positive other is negative and force becomes proportional to so it reduces 24x. यहाँ पे it's proportional to 24 यहाँ it's proportional to 1. So we say f dash is f by 24 and attract. It's same answer previous year था वैसे. So force becomes f by 24 and it becomes attractive. Two small spheres, conducting spheres, each of mass 9 into 10 raised to the minus 4 kg, are suspended from a same point by non-conducting strings of length 100 centimeter. They are given equal charges and the strings are inclined at an angle of 45 degrees with each other. Go to the vertical. Charge on each sphere. String problem. हमें दिया दो charges है दोनों का mass given है suspended from a same point. It makes an angle of 45 degrees the vertical. Distance is given as 100 centimeters. It forms a right angle triangle. So distance between charges will be 100 root 2. Because हमें दिया ये angle 45, this is 45. So ये 90 degree का angle बन रहा है.
So the perpendicular and base दोनों 100 है. So hypotenuse will be 100 root 2 centimeter. So बाकी normal concept है. Connecting downwards, electrostatic force. Since in equilibrium, in sine 45 is mg. Heavy, cos 45 is mg. Fe and mg are same. Sin 45 is 1. Mass given है, दोनों charges में distance given है, you just have to make the substitution. So substitute करोगे तो you will get the answer. 9 into 10 raised to the 9 square of 1. Since it's not to meter, 2 centimeter. तो उसको solve कर दो. Mass is given 9 into 10 raised to the minus 4. Clear है? Two identical metal spheres A and B carries charges plus Q and minus Q. Force between them is F. When they are separated by distance t here, the spheres are allowed to touch. Force between them is proportional to Q square and it's an attractive force. They are allowed to touch, so they will share their charges. After contact, charge on both will be minus Q by 2 each. And force becomes repulsive and it's proportional to. Initially, force is proportional to 2Q square. Now it's proportional to Q square by 4. That means it decreases 8 times. And this can be used only if you are given that you have identical metallic spheres. Because अगर इसमें advanced में उन्होंने दिया तो they will say non-identical. Non-identical means first you have to find the how charge gets distributed. Then it will not be equally distributed on both the spheres. फिर आपको पहले potential balance करके you have to find the charge और फिर ये concept लगा सकते हो. Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force F. Another uncharged sphere is touched to A and then placed midway between A and B. Net force on C is. Net force on C कितनी आएगी? हमें दिया identical spheres है. Each having charge Q. Force between them is KQ square by R square. Now we are given another sphere is touched to A and placed in between. That means both A and C will have a charge of Q by 2. B will have a charge of Q. You have to find the net force on C. Force exerted by A is in this direction.
नेट फोर्स है एफबीसी माइनस एफएसी प्लस ये चार्ज लार्जर है इसकी फोर्स ज्यादा होगी तो नेट फोर्स एफबीसी इज and FSC is net force as which is same as initial force F. So C पे जो force लगेगी that will be same and that force will be towards A. So F towards A. Two identically charged spheres are suspended by strings of equal length and the string makes certain angle theta with each other. When suspended in a liquid of density 400, the angle between strings remains same. When you immerse the system in a liquid, change will be कौन से दो change आएंगे when you immerse it in a liquid. अगर हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है tan theta is in here we say tan theta is Fe by mg. In mg can be written as V rho g. When you immerse this whole system in liquid, changes will be Fe की जगह क्या हो जाएगा सर डाइलेक्ट्रिक Fe कांस्टेंट by की फोर्स epsilon लगाई naught. Fe by k and mg V rho g की जगह 1 माइनस सिग्मा बाय रो जी so we say that tan theta becomes Fe by epsilon r to V rho minus sigma into g. तो इन दोनों को इक्वेट कर दो Again, silent RS. The formula में से learn भी कर सकते हो. Stopper and M squares. Rho हमें given है 1600. So it's 4 by 3. Three identical charges of magnitude 2 microcoulomb are placed at right angle triangle ABC, whose base is BC, height is BA, and are respectively 4 and 3 centimeter. Forces on a charge at right angle corner B to charges A and C are F1 and F. Angle between resultant force and evidence. चलो इसको सॉल्व कर लेट्स सी क्या आता है ऐसे गिवन है. Base is BC, height is BA. This is given as 4. Identical charges that you might remember. And then you are given forces on corner B due to charges A and C are F1 and F.
एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड एफ करो सॉल्व क्या आता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड एफ क्या है सॉल्व करके F1 is force between these two charges तो सेम है you can say F1 is conversion भी नहीं कर रहा सिंपल बिकॉज कैलकुलेशन चाहिए F1 is KQ square by 3 square F2 is KQ square by 4 square resultant forces diagonal और parallelogram एंगल बीटा बता रहे tan बीटा किसके इक्वल आएगा tan बीटा F1 by F1 by tan बीटा F1 by F tan बीटा is 16 by 9 so tan inverse 16 by 9 a ball of mass 0.5 kg is suspended by a thread and a charge 0.1 microcoulomb is supplied. When a ball with diameter 5 centimeter and a light charge of same magnitude is brought close to the ball, but below the tension decreases to one third of its initial value. Distance between centers of ball. हमें given a ball of mass 0.5 kg is suspended by a thread. Normal forces mark करेगा charge नहीं है तो mg is acting downwards, tension is acting upwards. And it is having a charge of 0.1 micro. We are given that when a ball of diameter 5 centimeter and a light charge of same magnitude is brought close to the first wall but below it. इसके नीचे एक और बॉल रखते हैं having light charge. Tension reduces to one third. Distance between centers of ball. इस पे भी चार्ज सेम इस पे फोर्स मार्क करें तो mg डाउनवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बन रही है T is equals to mg सेकेंड केस में T/3 और Fe अपवर्ड्स है mg डाउनवर्ड्स है so T/3 plus Fe and T/3 is mg/3 plus T is mg so you get Fe is kq square by r square it's 2/3 mg हमें गिवन क्या है मास गिवन है
एम इज गिवन, जी पता है, क्यू भी गिवन है, तो आर की वैल्यू निकालनी। क्लियर है? तो break down electric field in densities 3 into 10 raised to the 6 volt per meter. Maximum charge. Breakdown voltage क्या होती है? Breakdown voltage. मैक्सिमम वोल्टेज उसके Maximum बाद voltage. जब एयर आयनाइज कर जाती है। एक मिनट। So this is maximum electric field intensity. तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एयर कंडक्टिंग हो जाएगी। एयर कंडक्टिंग हो जाएगी, दैट मीन्स इफ यू ऐड मोर चार्ज टू इट, इट विल बी लीक बिकॉज आयनाइज हो गई है। सो सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एंड स्फीयर है, केवल से के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। सो यू कैन फाइंड कि चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता हो जाएगा। ये तो इजी है। पेंडुलम walk of mass 30 mg and a charge of 2 into 10 raised to the minus 6 coulomb is at rest in uniform horizontal electric field. Electric field is in horizontal direction. Tension in the thread of pendulum. Normally अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स सेट करेगी, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। फोर्सेस मार्क करें तो क्यू बी इन दिस डायरेक्शन, mg downwards, tension के components, टेंशन कितनी हो जाएगी, टी कॉस थीटा इज mg, टी साइन थीटा इज एपी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा is equals to mg square, टेंशन will be mg plus qe। इसमें से चेक कर लेना, इसमें से शायद आंसर नहीं आएगा, आई थिंक इनमें से एक वैल्यू गलत, टू के साथ 10⁻²⁰ आना चाहिए। माइनस आना चाहिए, -8 इस पावर्स डिफरेंट आ रही है, चेक करना, -8 के साथ आंसर आएगा। बट अदरवाइज कंसेप्ट ये है कि टेंशन बतानी है तो अंडर रूट ऑफ एमसी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। There are n electrons, ये JEE makes the previous year again, of charge in a drop of oil of density rho. It is an equilibrium in electric field and radius of drop is. Drop के अंदर n electrons and it's an equilibrium. Equilibrium means weight is balanced by electric force. तो मेरे पास एक ड्रॉप है जिसमें n इलेक्ट्रॉन्स,
अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं, mg is acting downwards, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे अपवर्ड एक्ट करेगी तो ये बैलेंस होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स अपवर्ड तभी लगेगी if इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। इससे mg is equals to qa. Mass of drop is 4/3 pi r cube rho is the mass, volume into density into g. Charges n drops है because इसमें क्या है? n electrons है. So charges any r बताना है हमने, तो r cube comes out to be 3 upon 4 by rho g. ये आएगा, but this is power बन रहा है. Clear है? 2 point charges, 4 and minus 9 are 0.5 meter apart. Electric field intensity 0 at a distance x from A, y from B. X and y are. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, हमें दिए 4 माइक्रोकूलम, एक -9 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो का, ये कंसेप्ट क्या था? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो सेंटर दोनों के सेंटर outside the line joining the two charges near the smaller charge. smaller charge. तो हम ले लेंगे यहाँ पे एट डिस्टेंस x और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेट कर देंगे 4 के कारण k into 4 by x square and 9 के कारण x plus distance between them is 0.5. So you get 0.x plus 0.5. X is equals to 1. Y is equals to 1.5. X is equals to 1, y is equals to 1.5. Charges of 10 microcoulomb are placed at opposite corners of a square of side root 2 and -10 microcoulomb at the remaining two corners. To be the number, electric field intensity at the center. Either charge 2 microcoulomb, check 10 microcoulomb. Either -10, center पर electric field intensity. इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा. So net field at the center will always be 0. Clear है ये concept? Because इसका टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका निकालोगे तो दे विल कैंसिल आउट. सिमिलरली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. So net field at the center will always be 0. N charges
Q, 2Q, 9Q, 16Q are placed at 1, 2, 3 meter from origin. Electric field at origin is. जल्दी से बताओ इसका आंसर. Electric field at origin. Vibrating charges are placed on x-axis. Net field at the origin. D option. अगर सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन नहीं तो सिंपली ऐड करना है आपको. इनसे के क्यू एन चार्जेस है. एन क्यू पर 4 आ लेना. ये तो सेम ही है. डायरेक्ट स्ट्रेंथ का क्वेश्चन. An electron is projected in an electric field of 9 into 10 raised to power 6 Newton per Coulomb in direction of field towards east. तो acceleration बतानी है. If electric field is towards east, force will be towards electron है तो. West. और acceleration का formula लगा दो बस. PE by charge on electron पता है, electric field given है, mass given है, mass पता है. So, but towards west. A bob of simple pendulum of mass 40 gram with a positive charge 4 microcoulomb is oscillating with time period. An electric field is applied vertically upwards, but the time period is T2. T2 by T1 की ratio. Normal time period of pendulum is T is 2 pi under root L by G. We are given that if it's charged, an electric field is applied upwards. New time period is G effective, and effective acceleration is ये step आ रहा है समझ. Because इस पे net downward force कितनी होगी. And effective value of acceleration is force over mass. तो g की जगह g minus q ही में है. तो T2 by T1 की रेशियो g minus q ही में. क्लियर है स्टेप. जो वैल्यूज गिवन है आपको, g तो पता ही है, चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है. टर्म्स आउट टू बी द वैल्यूज. मास गिवन है 40 ग्राम. QE comes out to be 3.6 into 10 raised to the minus 2. Mass is 40 down.
एक्सटेंस का क्वेश्चन है बी में किसके वैल्यू शुरू में आसान भी 0.8 क्योंकि डेटा हमेशा ऐसे दिया होगा एमसीक्यूज में कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट पॉइंट चार्ज this of 3 into 10 raised to the minus 9 Coulomb are which corners the square of side 15. Magnitude and direction of electric field at the vacant corner of squares. हो जाएगा ये क्वेश्चन इजी है अगर तीन कॉर्नर्स पे तीन चार्जेस है फोर्थ कॉर्नर पे फोर्स बतानी है कि फील्ड बताना है तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म चार्जेस गिवन है इसका फील्ड इस डायरेक्शन में तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा यस crashes because इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज ड्यू टू इट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई ए स्क्वायर दिस इज ऑल्सो के क्यू बाई ए स्क्वायर और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रूट टू ई तो नेट फील्ड इज रूट टू ई प्लस ई डैश ये इजी है वैसे जे एडवांस में आया था बट आसान क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट रीजन TA, EP and EC with the electric field at 3 points. 1, 2, 3, 1, 1, minus 1, 2, 2, 2. New charge Q. Then. तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रिलेशन बताना है कैसे करोगे नॉर्मल अगर मैं आपसे बोलूं से if you have a charge इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है T क्या होगी वेक्टर फॉर्म यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म K Q by R Q into वेक्टर R तीनों चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर पता है R1 is R3 is मैग्नीट्यूड्स की बात करें अगर R1 का मैग्नीट्यूड magnitude of R2 is 4, 3. R3 is plus 4 plus 3.
R1 R2 R3 के डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनका इलेक्ट्रिक सेम हो सकता है मैग्नीट्यूड, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज k क्यूब r स्क्वायर। अगर चार्ज सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखता हूँ, E1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं k क्यूब बाय 14 into s k क्यूब बाय 3 and t raise, ये सेटिस्फाई नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं। इसको कैसे चेक करें? ये परपेंडिकुलर टू ईबी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स परपेंडिकुलर तभी होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो वो ई एंड ईबी टू बी परपेंडिकुलर, R1 डॉट R2 जीरो आना चाहिए। तो सेम फॉर ई एंड ईबी टू बी परपेंडिकुलर, R1 डॉट R2 क्या है? 1 into 1, 2 into 1, 3 into -1, सेटिस्फाई हो रही है। Because R1 and R2 are perpendicular, therefore we say EA is perpendicular to E। देखो ध्यान से समझ में आए क्वेश्चन कैसे ही है? कोई डाउट है तो पूछो इसका। एडवांस का भी वही होता है वैसे, मेडिकल में तो इतना टफ नहीं आएगा। सर नेक्स्ट। अच्छी। सर और कोई तरीका है निकालने का इससे? नहीं, बिकॉज आपको परपेंडिकुलर चेक करना है तो वेक्टर्स का यूज करना ही पड़ेगा। मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हो पर जब आपको, बिकॉज आंसर्स में ऑप्शन देखो ना, पैरेलल परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स कब होते हैं? एंगल जीरो होता है बीच में, ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। पता चलता है if one vector is scalar multiple of the other। इसमें देखो वो सेटिस्फाई होती है कोई कंडीशन? अगर यहाँ पे वन आई वन से वन क्या होता ना तो ये सेटिस्फाई हो जानी होगी, बिकॉज देन R2 एंड R3 आर कोलिनियर, बिकॉज फिर R3 आ जाना था, इट्स ट्वाइस ऑफ R1 R2। तो कोलिनियर चेक करना आसान होता है। कोलिनियर चेक करना मतलब एक वेक्टर का दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो दे आर कोलिनियर। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करना पड़ता। 2 point charges, 2 microcoulomb and 1 microcoulomb are placed at distances P and A. The electric field vector at point AB will subtend an angle with the x-axis given by। हो जाएगा ये? तो हमें दिया था 2 point charges 2 and 1 microcoulomb। यहाँ पे चार्ज प्लेस किया 2 microcoulomb, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये चार्ज है 1 microcoulomb, ये डिस्टेंस गिवन है, B is given as 1। A is 2। हो जाएगा सॉल्व। P1 कितना होगा? This conversion भी करता है because it's not required। tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास ऐसे है, इवन इस डायरेक्शन है,
Real subject field. Tan theta is E2 by E1. The magnitude of electric field intensity at a distance x from charge q is E. An identical charge is placed at a distance of 2x from it. The magnitude of force experienced by it is magnitude of force experienced. कोई क्वेश्चन में क्या है? You have a charge q EQ by 4. and at a distance x electric field is E. Another identical charge is placed at 2x from it. The magnitude of force it experiences is because अगर distance double कर दिया तो electric field 1/4 and force is qing. JEE Advanced. Bob of simple pendulum is hanging vertically from a fixed identical bob by means of a string of length L. Both bobs are charged with charge q each time period of pendulums. हमारे को भी एक फिक्स्ड बॉब है और एक मूवेबल बॉब. यह फिक्स्ड है. इसमें चार्ज q इस तरीके ये ऑसिलेट कर सकता है. टाइम पीरियड बता. नॉर्मली हम सिर्फ बॉब को चार्ज करते थे. इसमें इस पॉइंट को भी चार्ज कर दिया जहां से सस्पेंडेड है. इसमें भी चार्ज है. अब टाइम पीरियड क्या हो जाए? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल दी है. पास ऑफ बॉब एम. नाउ द न्यू टाइम पीरियड विल बी कैसे निकालेंगे? न्यू टाइम पीरियड. सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या? डेरिवेशन कैसे की थी रूट याद है? एल बाय 11th क्लास में डेरिवेशन कैसे की थी? तो हमने 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ड्राइव किया था वो कैसे किया? अगर मैं डायग्राम बनाऊं 11th क्लास में हमने लिया था इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही. रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी थी? mg sin theta. रिस्टोरिंग फोर्स mg sin theta. mg साइन थीटा. अब सोचो यहाँ पे चार्ज क्यों रखा? इधर भी चार्ज क्यों रखा? रिस्टोरिंग फोर्स चेंज करेगी बिकॉज इन चार्जेस के कारण इधर फोर्स एक्ट करेगी एफई बिकॉज रिपेल करेंगे. तो रिस्टोरिंग फोर्स चेंज की है कि अभी भी mg साइन थीटा ही है? तो सेम ही रहेगी. टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा. 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी.
because restoring force is still mg sin theta और अभी भी वही डेरिवेशन होगी. सो अगर हम सस्पेंशन पॉइंट को चार्ज देंगे इट विल नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड. देखो कंसेप्ट आ रहा है समझ. अगर आपको डायग्राम से समझ आएगा कि एफ पी और एम जी कॉस थीटा है तो उससे टेंशन इन द स्ट्रिंग बढ़ जाएगी. बट अदरवाइज अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी सेम. Particle of mass 40 milligram carrying a charge is moving directly towards a fixed charge of magnitude 10 raised to the minus 6 coulomb. When it is at a distance of 10 centimeter from a fixed positive charge, it has a velocity. Point where it momentarily comes. Two charges. It will come a distance in a VR. It will come to rest at a certain point. तो R2 बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इनिशियली एनर्जी कितनी है सिस्टम में. टेंशन एनर्जी प्लस kinetic energy. When it comes to this, kinetic energy becomes zero. जितनी kinetic energy कम होगी पोटेंशियल उतनी बढ़ जाएगी. सो आपको सारी वैल्यूज दी है R2 निकालना है. Q1 Q2 गिवन है. because Q1 Q2 गिवन है कि एक चार्ज दिया है 5 into 10 raised to the minus 9. R1 दिया है 50 सेंटीमीटर. Sorry, R1 is 10 centimeter and B is 50 centimeters. Conversion करनी है. Substitute the values and you will get the answer. Conservation of energy. Clear? Two concentric hollow spheres of radii R1 and R2 have charges Q1 and Q2 respectively. R1 is greater than R2. Electric field intensity at a distance R from common sense. इन दोनों के बीच में electric field बताना. Yeah. Inner sphere पे charge है Q2, outer पे Q1. So electric field at a distance small r. तो फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर. अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये गॉसियन सरफेस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q1 और Q2. Q1. Q2 Q1 तो बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा. Because external point के लिए you can assume whole charge to be concentrated at the center. बेसिकली बाहर का तो कुछ देखना नहीं है हमारे पास. ये Q2 है. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डिस्टेंस r. It will be KQ2 by r square. Thin walled copper pipe 3 meter long, 2 centimeter in diameter, carries a net charge of 5.8 microcoulomb distributed uniformly. Electric field intensity at a distance of 8 centimeter from the pipe. We have a pipe.
2 centimeter diameter. Electric field बताना है at a distance of 8 centimeter from the axis. Right. The formula. एक्सटर्नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था सिलेंड्रिकल कंडक्टर का? E equals to because हमें लेंथ दिया 3 मीटर एंड डिस्टेंस है 8 तो यू कैन assume it as infinitely long wire. Lambda is q by l. चार्ज गिवन है लेंथ गिवन है 3 मीटर लॉन्ग और ये भी लो इसमें क्वेश्चन में क्यू गिवन है 5.8 माइक्रो R is 8 centimeter. Seconds of. Telescope करोगे तो भी get the answer. सर हाँ जी. सर जो सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता पाइप वायर से? इंटरनल डिफरेंट होता है एक्सटर्नल के लिए हमने कहा था सेम एज होल चार्ज कंसंट्रेटेड ऑन द वायर एट द एक्सिस. ओके सर। इंटरनल के लिए क्या कंसेप्ट था? तो इट्स उसके लिए डायरेक्टली आर. सिलेंड्रिकल। हाँ। इंटरनल के लिए इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. एक्सटर्नल के लिए तो उसको नॉर्मल मानते हैं कि होल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. तो इसका ग्राफ अगर आपको याद है ऐसे बना था. इंटरनल पॉइंट्स के लिए इट्स प्रोपोर्शनल टू आर. एक्सटर्नल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और सरफेस पे मैक्सिमम. नेक्स्ट टाइम करते हैं. कल भी सुबह क्लास लगाएंगे सो ये करके देख लो. कल इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे फिर. तो आज वाला में से देख लेना. अगर कुछ पूछना हो तो क्लास में पूछना चाहे मैं से यहाँ क्लास से पहले.